We have learned some few things in previous 4 sessions. So today our fifth session on previously asked question in interview for staff nurse bps16, and you are with the virtual academy for nurses job preparation. So after passing or qualifying the written exam, this is a golden opportunity to be sincere and serious with your study and preparation. We will discuss previously asked question. The question is, what is diabetes mellitus? As we think before the interview, there may be a very tough and very deep questions. But when we go through the interviews and pointed out the things, there is a very simple questions. We just review our previous study, previous subjects. So here is the question, what is diabetes mellitus? Diabetes mellitus is a disease associated with the abnormal high level of glucose. This is metabolic disorder. Diabetes mellitus is a metabolic disorder in which abnormally high level of glucose in blood is called hyperglycemia. It may be inadequate production of insulin, on inadequate sensitivity of cell receptor. मीन्स डायबिटीज mellitus एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें एबनॉर्मली शुगर लेवल हाई हो जाती है. जब शुगर लेवल एबनॉर्मली हाई हो जाती है तो इसके दो रीजंस होते हैं. देयर आर टू मेन रीजंस बिहाइंड इट. नंबर 1, लेक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन. इंसुलिन पेनक्रियास से पैदा ही नहीं होती या बहुत कम पैदा होती है, नंबर 1. नंबर 2 के जो इनएडिक्वाइट सेंसिटिविटी, जो सेल्यूलर लेवल रिसेप्टर्स हैं उन पे सेंसिटिविटी हो जाती है, उनके जो लॉक्स होते हैं वो जो है वो नहीं खुलते. इंसुलिन तो जिस्म में प्रोड्यूस होती है मगर स्टोरेज नहीं होती. जब स्टोरेज नहीं होगी तो जितने भी इंसुलिन, जितने भी शुगर हम ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, वो हमारी ब्लड में सर्कुलेट करती फिरेगी. तो वो एक्सेसिव अमाउंट जो एब नॉर्मल से हद से इंक्रीज हो जाएगी, उस कंडीशन को कहेंगे हाइपरग्लाइसीमिया. अब होता ये है कि डायबिटीज की मेनली 2 टाइप्स है. एक है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज mellitus, दूसरी है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज mellitus. नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज mellitus में हमें क्या करना होता है, ओरल पिल्स लेनी होती है. ओरल पिल्स जो होती है वो जो रेजिस्टेंस बन जाती है सेल्यूलर रिसेप्टर्स पे, वो उनको जाकर उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं. और दूसरी है कि इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होती हमारे जिस्म में, तो इसलिए इंसुलिन की जो है वो इंजेक्शंस लगाना पड़ती है. तो मेनली हम सिर्फ जब वो क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज डायबिटीज mellitus, then we can answer in our words. Diabetes mellitus is a metabolic disorder associated with abnormally high glucose level that is called hyperglycemia. There may be 2 reasons: inadequate production of insulin or inadequate sensitivity or cellular resistance. Tell me waterborne diseases. वाटरबॉर्नी डिजीज बताएं कि कौन सी. तो डिजीजेस व्हिच ट्रांसमिट्स थ्रू कंटामिनेटेड वाटर आर कॉल्ड waterborne diseases. Example: diarrhea, cholera, amoebiasis, hepatitis, typhoid, gastroenteritis. These are the very common diseases which transmit through contaminated water that are called waterborne diseases. Diarrhea, cholera, amoebiasis, hepatitis, typhoid, gastroenteritis. There may be few other names.
Best site for temperature taking. What is the best site for temperature taking? Most accurate site for temperature taking is suggested by scientists is a rectal temperature. What are the functions of bone marrow? It manufactures bone marrow stem cells and other substances which differentiate into blood cells. हमें पता है हमारे बोन के अंदर एक बोन मेरो सब्सटेंस और मैट्रिक्स होता है जो हमारे ब्लड सेल्स हैं वो बनाते हैं और उसको स्टिमुलेट करने के लिए जो बोन मेरो है उसको स्टिमुलेट करने के लिए हमारी किडनी में एक हार्मोन होता है एरिथ्रोपियोटिन। एरिथ्रोपियोटिन हार्मोन का काम होता है वो जाकर किडनी से रिलीज होता है और बोन मेरो को जाकर स्टिमुलेशन देता है स्टिमुलाई देता है कि रेड ब्लड सेल की कमी हो गई है जिसम में। क्योंकि हमारे रेड ब्लड सेल जो है वो उनकी लाइफ स्पान 120 डेज है एवरेज। तो उसमें जैसे उसकी शॉर्टेज होती है या कोई इंजरी होती है ब्लड लॉस होता है तो डिफरेंट काज की वजह से जैसे हमारी बॉडी में एक नॉर्मल वैल्यू वो है वो डिक्रीज होगा तो वो एरिथ्रोपोइटिन के जो है जाकर इंफॉर्मेशन देगा बोन मेरो को और बोन मेरो रेड ब्लड सेल बनाएगी। तो बोन मेरो जो है वो एक मैट्रिक्स है बोन्स के अंदर एक सब्सटेंस है जो स्टेम सेल बनाते हैं। स्टेम मीन्स बुनियादी सेल बनाते हैं और बाकी सेल जो है हमारे उनसे डिफरेंशिएट होते हैं। What are the functions of spinal cords? As we know, the spinal cord have curved. Why there is a curve? Because it gives support according to body structure. Spinal cord is flexible movement and curve during work. तो एक तो इसका ये है कि मूवमेंट प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द वर्क। पास मैसेज फ्रॉम सेंसरी टू ब्रेन। जितने भी मैसेज हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से आते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए पहले वो जाते हैं हमारे स्पाइनल कार्ड में और वहां से फिर जाते हैं ब्रेन तक। टू रिलाई मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट। और जब वो मोटर नर्व के मैसेज आते हैं ब्रेन से तो वो भी डिफरेंट बॉडी पार्ट तक वो पहुंचाता है। शाकिरा सर आवाज नहीं आ रही। बाकी सबको आवाज आ रही है। आप थोड़ा अपनी लोकेशन चेंज करें या हेडफोन जो है वो निकाल के फिर दोबारा लगाएं। तो बाकी सबको आवाज आ रही है और रिकॉर्डेड क्लास तो हम भेजते हैं और काइंडली आप लाइव क्लास भी अटेंड किया करें क्योंकि उसमें एक अलग कंसंट्रेशन होती है। ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं बार बार नहीं आती तो इसको थोड़ा बाकी सबको आवाज आ रही है। What are the what are the functions of pancreas? पेनक्रियाज के फंक्शंस क्या हैं? जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कर गए डिफाइन डायबिटीज mellitus। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पेनक्रियाज? पेनक्रियाज produces insulin to maintain sugar level. Number one, it produce
insulin from beta cells. It produces insulin to maintain sugar level. It produces enzyme for facilitating digestion. पेनक्रियाटिक डक्ट में जो पेनक्रियाटिक जूसेस आते हैं वो आकर कॉमन बाइल डक्ट से मिलके एम्प्यूला ऑफ जुजिनम फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में दाखिल होते हैं और वहां पे फैट एमल्सिफिकेशन के लिए, फैट डाइजेशन के लिए और कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए वहां पे वो एंजाइम फैसिलिटेट करते हैं डाइजेशन को। नंबर 2। नंबर 3, it produce somatostatin hormone for better growth of body. Somatostatin hormone for the growth of body. It produce enzymes or juices for facilitating digestion. It produce insulin for maintaining. इंसुलिन के साथ हम एक और भी गए, it produce glucagon for conversion of glycogen into glucose when we are on hunger or there is insufficiency of sugar in our blood circulation. जब हम इंसुलिन क्या करती है, जाकर it store the excessive amount of glucose which circulating in the blood, and when there is a we are on starvation and there is a need of sugar in our body and we are not taking oral or in other way the sugar, then stored sugar glycogen will be converted with the help of glucagon and then our body will use the sugar. तो जो अल्फा सेल हैं वो ग्लूकोगान प्रोड्यूस करते हैं। पेनक्रियास के दो जो है ये ड्यूअल ग्लैंड है। There are two sorts of our kind of glands, ductile and ductless. Ductless are called endocrine glands and ductile are called exocrine glands. पेनक्रियास ड्यूअल है, दोनों इसके सिस्टम है। पेनक्रियास जब डाइजेस्टिव जूसेस भेजता है तो वो इट सेंड थ्रू द पेनक्रियाटिक डक्ट and as I said, pancreatic duct goes to combine with the common bile duct and then to the small intestine. And insulin and glucagon are sent in blood directly. I mean, there is a no duct, ductless gland. ऐसे ग्लैंड जो अपनी सीक्रेशंस डायरेक्टली ब्लड में और अपनी सराउंडिंग में छोड़ते हैं तो इस ग्लैंड्स को कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो पेनक्रियास का ड्यूअल जो है एक्शन है, ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। Tell me the normal temperature of body and common sites of temperature taking. So there are three common sites for temperature taking: oral, rectal, axial. Their ranges of temperature are different according to sites. Oral temperature 37 centigrade normal and 98.6 in Fahrenheit is. There are three scales of temperature: centigrade, Fahrenheit, and Kelvin. Kelvin is very high, measuring very high temperature, as temperature is used in industries and other laboratories. But centigrade and Fahrenheit is very accurate to measure body temperature. Oral temperature in centigrade 37 and in Fahrenheit 98.6 are normal. Rectal 37.6 and 99.6 Fahrenheit is normal. And axial 36.4 centigrade and 97.6 Fahrenheit are considered as normal. And there is a common three sites for the temperature. Now there is a sensitive rods and instruments are available in market. From they measure temperature from forehead or any side of body by their radioactive thermals are also called thermal gun temperature.
What is the normal blood pressure? The normal blood pressure is considered systolic 120 mmHg and diastolic 80 mmHg. In this past test which you have qualified, there was hypertension, MCQs on the hypertension. When our systolic blood pressure above the 139 and diastolic above the 89 mmHg, that is called hypertension. From 139 systolic and 89 diastolic, above them is called hypertension. Name the parts of stomach. Stomach is a pouch-like muscular organ which lies in abdominal cavity. There are three main parts of stomach. The most upper part is called fundus. Central part is called body, and lower part where from small intestine begins, the part is pylorus. There is a two sphincter in stomach. Above the fundus and esophagus, there is cardiac sphincter or cardiac valve that prevent from backflow of stomach content. And there is a pyloric sphincter at the junction of pylorus and small intestine, which also prevent from backflow from the duodenum or intestine. What is SOPs? SOPs is a short form which stand for S for standard, O for operating, P for procedures. Standard operating procedures. When we are in ward or in the treating patient, there is a SOPs for every hospital, every ward, and for every patient. That are standard operating procedures. For example, gloves, gown, mask, सर sanitizer. जी हाँ सर है जो SOPs है जो लास्ट में S तो चे यो छाके procedures procedure जे पोया एस लगल आहे. ठीक है सर. ॿियो टर्म थींदो आहे PPE. तव्हां ॿुधो हूंदो बाबा PPE कोन्हे, PPE नथी मिले. कोविड में किराए हले पई, PPE न आहे. पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. जे SOPs आहे ईअं हूंदो आहे PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. Define pandemic. What is pandemic? The word pandemic. Word pandemic is a Greek word. Pan means all and demo या dam means population. A disease which is spread very quickly and worldwide is called pandemic. कोई भी डिजीज जो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो जाए, पूरी दुनिया में एक ही दम फैल जाए, सारी पॉपुलेशन में फैल जाए, तो उस डिजीज को कहेंगे पैंडेमिक. डिफाइन एंडेमिक. A disease or organism that spread in a particular area. A disease or organism that is spread in a particular small area is called endemic. And what is epidemic? An outbreak of disease in very specific population or community.
सर ये एपिडेमिक थोड़ो दोबारा रिपीट कजो। जी दा सर ये लास्ट बार जो एपिडेमिक, जी जी हाँ इन खे रिपीट कजो सर, मतलब बहुत सम्झ में अची वियो त जो जेका आहे पेंडेमिक वर्ल्ड वाइज थी वञे ऐं एंडेमिक जेको मतलब कंहिं मखसूस एरिया में थी वञे, ऐं एपिडेमिक छा आहे सर, इन खे थोरो रिपीट करियो सर। एपिडेमिक अहिड़ी डिज़ीज़ जेका कंहिं बि स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन हिकिड़ी कम्युनिटी लिमिटेड, कॾहिं कॾहिं असां ॿुधंदा आहियूं फलाणी कम्युनिटीअ जा 10 ॿार जेके आहिनि उन्हनि खे फलाणी डिज़ीज़ में मुब्तला थी विया। स्पेसिफिक जॾहिं एंडेमिक जेका आहे उहा कम्युनिटी स्पेसिफिक न आहे, पॉपुलेशन स्पेसिफिक न आहे, पार्टिकुलर एरिया में थिए थी। पर कॾहिं कॾहिं कुझु डिज़ीज़ मुख़्तलिफ़, फॉर एग्ज़ाम्पल कॾहिं असां ॿुधंदा आहियूं जीअं हिकिड़ियूं जेके हूंदियूं आहिनि माइग्रेटरी कम्युनिटियूं, लाॾाऊ माण्हू जेके हूंदा आहिनि उन्हनि जी मखसूस हिकिड़ी एरिया में अची वेठा आहिनि, उन्हनि जी मखसूस कम्युनिटी आहे पंहिंजी, उन कम्युनिटीअ में का डिज़ीज़ फाउंड थिए थी, मिले थी फॉर टाइम लिमिटेड, ऐं पोइ वरी उहा उन टाइम लिमिटेड खां पोइ उहा फौरन ख़तम थी वञे थी, इनखे चऊं था एपिडेमिक। ठीकु आहे सर, जीअं मतलब मखसूस कंहिं सोसाइटी में थी वञे सर। ईअं चई सघो था। ठीकु आहे सर। What is cyst? A cyst is a sac-like pocket of membrane tissue that contain fluid, air, or other substance. Cyst हिकिड़ी का गोड़ी थिए, को गढ़ थिए नंढड़ो, उन में एयर भी हुजे भले या फ्लूइड हुजे, पस उन में हुजे, अदर सब्सटेंस हुजनि त उन खे चवंदासीं cyst. How many motor nerves? There are no specific number of motor nerve are also afferent nerve located in central nervous and spinal cord, brain and spinal cord. What are the functions of sensory nerves? Sensory nerves are those nerves which carry the message from the body to spinal cord and brain. These nerves are also called efferent nerve. ऐसी नर्व्स जो हमारी बॉडी में हमारे बॉडी पार्ट से मैसेज लेकर आए हमारे स्पाइनल कार्ड और ब्रेन तक। फॉर एग्जांपल हमें किसी आग पे, किसी जलती हुई चीज पे हाथ रखा और वहां पे जलन हुई, तकलीफ हुई, तो फौरन वो मैसेज हमारा ब्रेन, स्पाइनल कार्ड टू ब्रेन पहुंचा, तो ये हमारी सेंसरी नर्व थी जो यहाँ से मैसेज लेकर गई, इसको इफ्रंट नर्व कहेंगे। और जो नर्व हमारे ब्रेन से अब मोटर नर्व, अफ्रंट नर्व जो मैसेज लेकर आई कि भाई हाथ उठा ले, यहाँ पे ये हाथ जल रहा है, तो उसे कहेंगे मोटर नर्व और अफ्रंट नर्व। सेंसरी नर्व और इफ्रंट नर्व which carry message from body part to spinal cord and brain, and motor nerve are nerve which carry message from brain or spinal cord to peripheral part of body. Briefly explain eye. You can explain in your words. The eye is our organ of vision. It is a sense organ or a special organ. Its complicated design means that an image can pass through its many layers and accurately focus on any point or anything. Is the point which focus on the image is called retina. The retina is covered with light sensitive cells called rod and cone cells. ये ब्रीफ जब एक्सप्लेनेशन होती है तो आप इनके पार्ट बताना चाहें तो आप वो थोड़े सिंपली वो बता दें कि आई एक आर्गन है विजन का, और जो बना हुआ है आई लिड उसके ऊपर है, और उसके अंदर जो है स्क्लेरा है, उसके अंदर रेटिना है, रेटिना के अंदर जो है वो रॉड एंड कोन सेल है, और वो हमारी जो है नर्व्स जो है सप्लाई होती हैं उसको,
नरिश करने के लिए विट्रस ह्यूमरस होता है, और ये जो आई है वो रखी हुई होती है हमारी ऑर्बिटल कैविटी में। ठीक है, तो डिफरेंट आप इसका वैसे दे सकते हैं, मीन सेंसेबल हो जिससे सेंस निकलता है। व्हाट इज एनोक्सिया? आपने इससे मिलता जुलता टर्म भी सुना होगा कि एनोरेक्सिया, एनोजिया, एनोरेक्सिया, एस्फेक्सिया। तो ये कुछ टर्म होते हैं जो रिलेट, थोड़ा इनका जो साउंड होता है मिलता जुलता होता है। एनोक्सिया, एन मीन्स एब्सेंट, जहां पे भी प्रीफिक्स, हर जो साइंटिफिक वर्ड होता है वो टू पार्ट का बना होता है, वो बना होता है प्रीफिक्स और सफिक्स का। तो यहाँ पे जैसे प्रीफिक्स है एन, एन या अ, जिसकी मैना होते है, जिसका मतलब होता है एब्सेंट। ऑक्सिया मीन्स ऑक्सीजन, एग्ज, दूसरा वर्ड होता है हाइपोक्सिया, हाइपो मीन्स डिक्रीज, एनो मीन्स एब्सेंट, एन मीन्स एब्सेंट। एनोक्सिया मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाइपोक्सिया मीन्स शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, और एनोरेक्सिया मीन्स लैक ऑफ एपिटाइट, भूख का कम लगना या भूख नहीं लगना, भूख ना लगे या बहुत कम भूख लगे और खाना बहुत कम खाए, तो एनोरेक्सिया उसे कहते हैं। एनोक्सिया मीन्स एब्सेंट ऑफ oxygen. Hypoxia means there is shortage of oxygen. Their body color will be changed in bluish color. Define incubation period. हम काफी डिजीजेज हैं जो बैक्टीरियल और वायरल हैं, उनके इंक्यूबेशन पीरियड भी जो है पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल वाले उसमें पार्ट में सेशन में। तो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि डिफाइन इंक्यूबेशन पीरियड, द पीरियड बिटवीन exposure to infection and appearance of first symptom is called incubation period. Incubation कहते इसलिए हैं कि जो entry of agent, entry of pathogen in our body जब वो हो जाए तो उसके बाद उसकी अपनी मल्टीप्लीकेशन होती है। पहले पहले जैसे कुछ जरासीम जैसे हमारी बॉडी में दाखिल हुए तो कोई भी वो साइन सिम्टम जाहिर नहीं होगा, क्योंकि वो जाकर वहां पे अपनी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अपना अमाउंट बढ़ाएंगे। जैसे उनका क्वांटिटी बढ़ेगी तो वो हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करना शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद कोई साइन और सिम्टम फिर शुरू हो जाएंगे। तो किसी जरासीम का लगना हमारे जिस्म में, और तब तक जब वो मल्टीप्लीकेशन करके वो डिजीज काज करता है और हमारे बॉडी में कोई साइन और सिम्टम पैदा होते हैं, तो उस पीरियड को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो हर डिजीज का अपना अपना, हर पैथोजन का अपना अपना इंक्यूबेशन पीरियड होता है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फीवर? इंटरमिटेंट फीवर, रिमिटेंट फीवर, हेक्टिक फीवर, कंटिन्यूअस फीवर, रिलैप्स फीवर, राइगर फीवर। सिर्फ उन्होंने टाइप्स पूछे हैं और हर एक टाइप की डेफिनेशन और डिफाइन नहीं पूछा। What are the types of fever? Intermittent fever, remittent fever, hectic fever, continuous fever, relapse fever, rigor fever. What is the intermittent fever? This is a fever has fluctuation baseline between normal temperature and fever levels over the course of day. इस फीवर में फ्लक्चुएशन होती है, मीन्स डिक्रीज और इंक्रीज होता है। कुछ टेम्परेचर की डिग्रीज इंक्रीज और डिक्रीज होती हैं ओवरऑल डे में, पूरे डे में या 24 आवर में बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से करीब भी आएगा और उससे बढ़ भी जाएगा। तो इस फीवर को कहेंगे इंटरमिटेंट फीवर। रिमिटेंट फीवर, दिस टाइप ऑफ फीवर में कम एंड गो।